All of you see question number 19. Question 19. Apruti and Vibhuti were partners in a firm sharing profits in a ratio 2:1. The balances in their capital and current account as on 1st April 2023 were as under. Capital account: Apruti 3 lakh, Vibhuti 2 lakh. Current account: Apruti 60,000 debit, Vibhuti 12,000 credit. Wait. Akriti current account balance is 60,000 debit. Debit means this is negative balance. और Vibhuti 12,000 credit. We have to prepare partners current account, तो इन balances को पहले लिख लीजिए. Credit balance will come in credit side. By balance brought down. Amount. Akriti is having debit balance, so debit balance will come in debit side. To balance brought down, which is 60,000. Yes, after this. The partnership deed provided that Apruti was to pay a salary of 22,500 per quarter. 22,500 per quarter. How many quarters are there in a year? 4. So 22,500 को 4 से multiply करेंगे. 90,000. It will be 90,000. Salary Akriti को हम देंगे 90,000. Then. Whereas Vibhuti was to get a commission of 15% on net profit before charging such commission. Okay. Your net profit is? Net profit 1 lakh. Amount of net profit is 1 lakh. Calculate 15% on it. It will be 15,000. Then Interest on capital was to be allowed at the rate 6% per annum. ठीक है. Capitals are 3 lakh and 2 lakh. Calculate 6% on 3 lakh. It will be 18,000. And 6% on 2 lakh. It will be 12,000. तो like this आप आकृति को appropriation दे रहे हो 1,08,000 और विभूति का appropriation बन रहा है 27,000. ठीक है. Next. Whereas interest on drawings was to be charged at the rate 10% per annum. Okay. The drawings of Apruti were 40,000 drawn on 1st July 2023 and Vibhuti withdrew 30,000 on 1st December 2023. ठीक है. आकृति के ड्राइंग से 40,000 रुपीज विड्रॉ कर रही है आकृति 1 जुलाई को. Rate of interest on drawing is 10%. 40,000 into 10% into 9 by 12, it will be 3,000. Like this, Vibhuti का interest on drawing find करेंगे 30,000 into 10%. ये 4 month का होगा because उसने amount withdraw किया 1 दिसंबर को. December, January, Feb, March, it will be 1,000. Both interest on drawing will come in credit side of profit and loss appropriation account by interest on drawings. Akriti and Vibhuti. Amount of Akriti is 3,000. Vibhuti is 1,000. Total 4,000. Okay. The net profit of the firm for the year ending 31st March 2024 before making the above adjustment was 1 lakh. Prepare. Net profit of the current year is 1 lakh by profit and the loss account. Write 1 lakh. Yes, next. Prepare profit and loss appropriation account and partners current account. Partners current account. So we have 1 lakh rupees trading profit before everything and 4,000 rupees interest on drawing. तो total profit जो हमारे पास है divisible profit वो है 1,04,000. और आप देखिए appropriation की जब बात करते हैं तो आकृति का अमाउंट बन रहा है 1,08,000 और विभूति का 27,000. इसका टोटल होता है 1,35,000. तो आउट ऑफ 1,04,000 1,35,000 का पेमेंट तो पॉसिबल नहीं है. तो हमें 1,04,000 में रेस्ट्रिक्टेड होना पड़ेगा. दैट मीन्स क्या करना चाहिए? आकृति एंड विभूति. आकृति इज गेटिंग 1,08,000. विभूति 27,000. आप इसका प्रपोर्शन बनाइए. इट्स 4:1. और आपका जो टोटल प्रॉफिट है 1,04,000. 83,000. आप इसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. इट विल बी 83,200 and 20,800. Sir, it's 27,000. 27,000. Yes, sir. You are distributing 1,04,000 in 4:1.
क्या आ रहा है? 83,200 and 20,000. सर ऊपर सर विभूति के नीचे It's 27,000 ठीक है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही आ रहा है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इस अमाउंट को ट्रांसफर करिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट because their capitals are fixed. Akriti and Vibhuti, it will be 83,200 and 20,800. Total 1,04,000 or 1,04,000. So that means in spite of giving separate appropriations like salary, commission, interest on capital, हम एक consolidated amount दे देंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल आकृति को 90,000 सैलरी मिलना था, विभूति को कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना थे दोनों को, तो वो हम सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे. आप क्या करेंगे, टोटल जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है आपके पास 1,04,000, उस अमाउंट को आप देखिए, ये मैंने प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसको मैंने एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है. और एप्रोप्रिएशन का रेशियो ये यहाँ से आ रहा है, देखिए 1,08,000 आकृति का बनता है और 27,000 विभूति का, तो ये रेशियो आपका 4:1 आ रहा है. तो 1,04,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सिंपली. ठीक है, अब इसी को आप इंटरेस्ट मानिए, इसी को सैलरी, कमीशन, जो भी आपको मानना है वो मानिए. बट एट द एंड आकृति इज गेटिंग 83,200 एंड विभूति इज गेटिंग 20,800 बिकॉज योर प्रॉफिट वॉज ओनली 1,04,000. अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स करंट अकाउंट में ओनली दिस थिंग विल कम by profit and loss appropriation account 83,200 and 20,800. Okay, and in debit side, apart from opening balance, drawings and interest on drawings will also come. So amount of drawings are 40,000 and 30,000. And then interest on drawings. These are 3,000 and 1,000. अब आप इसको क्लोज कर लीजिए. Credit total of Akriti is 83,200. Minus करिए, calculate closing balance. नहीं, तो ज्यादा है. This total is 1,03,000. 1,03,000 माइनस करिए 19,800. बाई बैलेंस सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, बट दिस इज डेबिट बैलेंस, स्टिल नेगेटिव बैलेंस. अब विभूति देखिए, यस 32,800 क्रेडिट टोटल 32,800. इट्स जस्ट 1,800. ठीक है, विभूति का 1,800 क्रेडिट बैलेंस. आंसर्स गिवन होंगे, इसको चेक कर लीजिए. अब बताइए, एक बार फिर से आप इसका रिव्यू देखिए. सबसे पहले आकृति एंड विभूति 2:1 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैपिटल्स आर गिवन, करंट अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन. करंट अकाउंट बैलेंसेस में ध्यान रखना है, डेबिट बैलेंस विल बी देयर, यू हैव टू राइट दैट बैलेंस इन डेबिट साइड. If credit balance is there and you have to write that amount in credit side, then you calculate your appropriations. Appropriation का total आ रहा है 1,08,000 and 27,000. That means total 1,35,000 as appropriation you have to distribute. But you have only 1 lakh rupees profit, 4,000 interest on drawing charge किया, तो total amount आपके पास 1,04,000 है. Out of 1,04,000 you cannot give 1,35,000. Rather you have to be restricted on 1,04,000. तो 1,04,000 को आपको क्या करना होगा, इनके जो एप्रोप्रिएशन है 1,08,000 एंड 27,000, इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे. You have calculated, it's very easy to calculate, it will be 4:1. So that means 1,04,000 rupees का जो आपके पास maximum profit है, you will distribute this amount in this ratio. It will be 83,200 and 20,800. Finally, you will write this amount in P&L appropriation account debit side. Then with the help of this, you can easily prepare partners current account. Chalo.